तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो लेके आए हैं जो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसका टाइटल था इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। हमने चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस और पावर क्राइसिस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ है। क्या श्रीलंका का जो इकोनॉमिक संकट है, जो आर्थिक संकट है, वो चाइना के आर्थिक संकट जैसा ही है या कुछ डिफरेंट है, वो हम जानेंगे। तो जो चाइना में जो आर्थिक संकट था वो तो मेनली रियल एस्टेट का और पावर कोल शॉर्टेज का संकट था। और जो श्रीलंका का क्राइसिस है वो भी मतलब पेमेंट बैलेंस के लिए ही है, लेकिन उसका टॉपिक अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। उसके सब्जेक्ट्स हैं डिप्लीटेड फॉरेक्स रिजर्व्स, मीन्स दैट कि व्हाट कॉजेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। सो आप सितंबर 6 से आप एक वीक पहले की बात करते हैं। सितंबर यानी क्लोज टू 29-30 अगस्त में श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी वहाँ की सरकार ने लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि वहाँ पर बहुत उनके लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। क्या संकट उत्पन्न हुआ था? सबसे पहला चीज वहाँ पे डिप्लीटेड फॉरेक्स रिजर्व्स। जो फॉरेक्स रिजर्व्स हमने पढ़ा था कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी ऑल टाइम हाई पर है, क्लोज टू $630 बिलियन। तो उसी तरह चाइना का जो हमने पढ़ा था कि ये चाइना फॉरेक्स रिजर्व इज 5 टाइम्स द इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। उसी तरह से ये फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हिंदी में बोलते हैं। सो द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ श्रीलंका is very low and it has been depleted day by day, depleted forex reserves. See that in 2019 the forex reserves of Sri Lanka is $7.5 billion, and in July 2021 the forex reserves of Sri Lanka is $2.8 billion. So the amount of decreasing of the forex reserves of Sri Lanka is very drastic and very shocking for the government. So what are the reasons for this? So you can't blame Sri Lanka totally for this for these things, because the main revenue or the main forex reserves earned by Sri Lanka is through tourism. People from different parts of the world came to Sri Lanka to watch the tourist places of Sri Lanka, and they earn money from them. And most importantly, the foreign currencies which constitute forex reserves came from them. For example, some people of US came to Sri Lanka and gave dollars. Some people from Japan came and gave their currency. So that's all. But due to the COVID-19 pandemic all over the world, the tourism industry, not only in Sri Lanka but all over the world, is in disarray. It has been stopped, and it close to 2 years it has been stopped, and it has affected Sri Lanka very badly, because it was still hanging in the Chinese debt trap. And what complemented their economic trouble is the stopping of tourism in their country. And the second reason, the most important reason of Sri Lanka's economic trouble is the Chinese debt trap. As you know that the China had spent billions of dollars into Sri Lanka, invested. So due to this, the Sri Lankans are over independent on China. They believe that whenever they are in economic trouble, their Chinese friends will bail out. But there is a strategic point from China to invest on Sri Lanka. They are investing to get the sovereign rights on its territory. So what the Chinese debt trap? The Chinese debt trap is that the first China lent some money on the name of investment, on the name of development of some ports, some lands. Example, the Hambantota port of Sri Lanka. Now when they lent, they tell them that they will make this port very much internationally standard. The trade will increase on this port, and the Sri Lanka will benefit from it. Then the Sri Lanka came in, the Chinese बेनिफिशियल ऑफर्स। तो चाइना के बेनिफिशियल ऑफर में श्रीलंका आ गया।
श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया उनको विकास करने के लिए। हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने विकास किया, उस पर मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट किए। जब वो फिर से ओपन हुआ तो उस पर उतना ट्रेड नहीं हो पाया जितना श्रीलंका ने सोचा था। लेकिन अब जो चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है वो तो कर्ज हो गया श्रीलंका पर। अब उसकी वजह से जब चाइना ने अपना कर्ज वापस मांगा, when they demanded their debt, so Sri Lanka is unable to pay back its debt, so they take the हम्बनटोटा पोर्ट। मतलब हम्बनटोटा पोर्ट को हमेशा के नहीं लिया, 99 ईयर के लीज पर ले लिया उन्होंने। मतलब 99 ईयर तक ये हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पक्ष में रहेगा। सो यू कैन इमेजिन द प्लाइट ऑफ ए कंट्री वेयर इनसाइड इट्स ओन कंट्री an outsider or any outsider country came and took some part of land, and that part of land is very important for this country. It is a port, and Sri Lanka have to give sovereignty to China on this port. Another example is the reconstruction of Colombo port. So they are also exercising sovereign rights on Colombo port, also Chinese people. Now this is the real sign of terror for India, not terror but fear, because the Colombo port is very important for India, because 70% of the trade of India, sea routes are gone through, मतलब जो not 70%, मतलब major part of Sri Lanka of the trade of India is go through Colombo port. So if China acquires Colombo port, it will be a threat to India. So we will talk to this point later. Now what causes this crisis? Amidst of the crisis, there is another trouble, that value of Sri Lankan money depreciated by around 8%. This causes the rise in food items. This causes the rise in prices of food items, which led to an agrarian crisis. Now another thing is that government ban on using chemical fertilizers half the production of tea and other words. So Mr. Rajapaksa decision to ban chemical fertilizers, because his dream to make Sri Lanka first country to use 100% organic farming. So he bans chemical fertilizers that halved the production of tea and other crops, because without chemical fertilizers it is impossible to build. So that is a good thought, that you have to use organic farming, that will reduce pollution, but you have to go step by step. First you have to cut down some extent of chemical fertilizers use, then some extent, and then you have to adapt the farmers of your own country of Sri Lanka to how to use organic fertilizers and how to increase production by using organic fertilizers. But you are suddenly you are announcing that there will be no use of chemical fertilizers and 100% organic farming will be used. So that halves the production of tea, which is the major crop of China and source of revenue, and other crops also. That also leads to some agrarian crisis, food crisis. And what was the government response on that? Government is unwavered. It is still unwilling to allow the use of chemical fertilizers, and instead it is telling that they will teach farmers how to use organic farming. The statement of Mr. Rajapaksa is that the short-term pain of this economic trouble by not using chemical fertilizers will give long-term benefits, environmental benefits, he said. So he is right, but you have to go step by step. In democratic rule, you can't change suddenly any decision or take certain decisions. It requires debate, and that's why it is considered the best form of government, ahead of dictatorship and monarchy. But in Sri Lanka it is a democracy, but only for the name, because only one family ruled that democracy. So, and Sri Lanka are recently started to मतलब श्रीलंका में अभी रिसेंटली ही वो हुआ था, वो आगे बढ़ रहे थे, तब तक वो हो गया उनका। उसी की वजह से कैपिंग फूड प्राइसेस की वजह से उनका डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था वो भी पूरा नहीं हुआ। डिमांड बढ़ गया और सप्लाई भी उतना हो नहीं पाया, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। तो ये श्रीलंका की क्राइसिस है। यहाँ पर जो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक का डिसीजन था कि $1 पर 200 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होंगे श्रीलंकन रुपीस, वो भी श्रीलंका के फ्लाइट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो कैपिंग फूड प्राइसेस का कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से भी श्रीलंका में एग्रेरियन क्राइसिस हुआ है।
इसका वे आउट क्या है? जो श्रीलंकन कंपनीज हैं वहाँ पे उनको ये सरकार को फोर्स करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे, और इंडिया के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल ओवर इट्स नेबरहुड है। जैसे कि अफगानिस्तान में भी तालिबान की वजह से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक फेलियर से बार बार बेल आउट करता है, कभी चाइना, यूएसए। श्रीलंका भी फंसा हुआ है, चाइना में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है। आसियान कंट्रीज़ जो हैं, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, उनके भी एक प्रॉब्लम्स हैं। बांग्लादेश इज ओवर रिलायंट ऑन चाइना, जिसकी वजह से वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। सो यहाँ से इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। सो एज समवन वाइज पर्सन हैड सेड दैट कि एन अनस्टेबल नेबर और अनस्टेबल नेबरहुड वेदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इज नॉट गुड फॉर ओन कंट्री। मतलब इंडिया के लिए भी गुड नहीं है। तो इंडिया को भी, लेकिन इंडिया इज़ टू बिग टू प्रॉब्लम, मतलब इंडिया इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर तो अभी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, उसके खुद की कोरोना पैंडेमिक से वो निपट नहीं पाया है। तो इंडिया के अंदर खुद ये इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो इंडिया को पहले इससे निपटना होगा, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना होगा, तब इनकी मदद करके चाइना के प्रेशर से इनको हटाना होगा। सो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और इसी तरह के हम नई वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर पहले वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके बहुत यूज़फुल होंगे। और ये जो भी बताता हूँ उसके आप एक नोटबुक बना लें और नोटबुक में लिखते रहें, जिससे आपको आने वाला अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बेनिफिट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।